about the pancreatic secretions, mainly the exocrine part of the pancreas, that is the exocrine pancreas, what the pancreas secrete as a digestive enzymes, So we'll see how the pancreatic secretions are secreted from the pancreatic tissues and how they are regulated and what is their composition, and we'll see all these things today in this lecture. So you can see the location of the pancreas. Starting with the location of the pancreas, the anatomical aspect of the pancreas. This pancreas is located behind the stomach. It is a retroperitoneal structure, and on the right side is the duodenum, second part of the duodenum mainly. On the left side it is the spleen. Spleen is there, and you can see the ductal system of this pancreatic tissue. You can see the ductal system of this pancreatic tissue. These are the intralobular ducts, then the interlobar ducts. This is the main duct system, main duct system, that is called the duct of Wilson. So this is the anatomical aspect of this pancreas. You can see the hepatobiliary ductal system, that is the right duct and left duct. They join the cystic duct and forming the common bile duct, and ultimately it joins with the main pancreatic duct, forming the ampulla of the Vater here, and it opens into the duodenum with the duodenal papilla, major duodenal papilla, and there is a sphincter here, that is the sphincter of Oddi. And there is an accessory pancreatic duct that also opens in the duodenum area to the minor duodenal papilla. Okay. So you can see here the ampulla of the Vater. Okay, that is the common bile duct joining with the main pancreatic duct and forming the ampulla of the Vater, and ultimately it is opening in the second part of the duodenum, and at the opening there is a sphincter that is called the sphincter of Oddi. Okay, and you can see the structure of the pancreas. Okay, if you cut section है इसका pancreas का, and you can see there are the two parts of the pancreatic tissue, that is the exocrine part and that is the endocrine part. Exocrine part forms the major chunk of the pancreatic tissues, and you can see these are the interspersed islet cells, that is the endocrine part of the pancreas. और ये सब क्या है आपका? You can see here these are the acinar cells which forms the exocrine part, which these acinar cells, that is the lobular area. Okay, so the exocrine part of the pancreas, this consists of acinar cells. Okay, and they secrete the digestive juice, pancreatic digestive juices, and you can see the interspersed islet cells which are having the alpha cells and beta cells. As you know, beta cells secrete the insulin hormone, and alpha cells glucagon hormone, which regulates the glucostasis में help करते हैं. Okay, all these things. So we will discuss here. You can see this is the single acinar cells. Okay, these acinar cells are lined by the ductal system. ये duct system होते हैं जो इसके जो secretions होते हैं. These are the acinar cells. You can see here. These are the zymogen granules. You can see ये granules form में zymogen granules consisting of the pancreatic enzymes, है ना, pancreatic enzymes होते हैं, and these are the ductal systems lining duct cells. These ductal cells also enter the acinar area, and that forms the centroacinar cells. You can say these are the zymogen granules. So this is the pancreatic acinus, which secretes mainly the digestive enzymes. So physiological anatomical aspect, the pancreas is a large compound accessory digestive gland, and it lies retroperitoneally. We have discussed it is posterior to the stomach, and physiologically it consists of two parts, that is the exocrine part, which forms the major chunk and it produces the pancreatic juice, and the endocrine part, that is the islets of Langerhans, which secretes the insulin hormone and glucagon hormone. Then exocrine pancreas histologically resembles the salivary glands. Salivary gland की तरह ये resemble करता है. It consists of lobules which consists of multiple acinus, है ना, बहुत सारे acinus मिलकर के lobules बनते हैं, and इसी से acinus से क्या होता है, digestive juices निकलते हैं, pancreatic digestive juices. The acinar cells
contains the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and the zymogen granules. And there are few centroacinar cells which lines the lumen of the acinus. So the acini, as I have discussed you, that the acini secrete the pancreatic digestive juices. So coming on to the pancreas composition and the properties, as you know, it is a alkaline juice. The pancreatic juice क्या है? Alkaline होता है, pH range from 7.8 to 8.4 and it is a colorless transparent juice fluid होता है, and it is alkaline क्यों होता है? Because it is having a high alkaline content, that is the bicarbonate content, and approximately 1.5 liter per day it is secreted. And what is the stimulus to the secretion of the pancreatic juice? Mainly the acidic जो काइम आ रहा है स्टमक से, जो काइम आता है, that is the acidic, mainly you know gastric juices होते हैं वहाँ पे, so it is highly acidic, and that acidity of the काइम you know it is there in the stomach में होता है, it form होता है वहाँ stomach में, and वो जब enter करता है duodenum में, what happens that acidity of the chyme is, it forms the stimulus to secrete the आपको pancreatic juices. कैसे होता है ये हम देखेंगे आगे. The pancreatic juice consists of mostly water, approximately aqueous component होता है. The aqueous component consists of water and ions. They constitute 98% approximately, and these are the enzymatic component. That enzyme, the pancreatic juice में जो enzymes होते हैं उसमें क्या क्या होता है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन्स को लाइसिस कराते हैं, है ना, पेप्टाइड से बनाते हैं एंड पेप्टोन से बनाते हैं स्मॉलर प्रोटीन्स में. देन देर आर लाइपोलिटिक एंजाइम जो लिपिड्स पे काम करते हैं, एंड अमाइलोलिटिक जो कि स्टार्च पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करते हैं. नो, द ट्रिप्सिन इनहिबिटर इज आल्सो देयर, है ना. विल सी व्हाट इज देयर रोल. पैंक्रेटिक डाइजेस्टिव जूसेस, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द, ये जो जूस होता है पैंक्रेटिक जूस, it is capable of digesting all the three major stuffs of your food, you know, that is the proteins, carbohydrates and fat, and you know it consists of large quantities of bicarbonate ion. बाइकार्बोनेट आयन होता है, इसलिए जो एसिडिक काइम आ रहा होता है हमारे स्टमक से, जो आपको इंटेस्टाइन में आ रहा है, ड्यूडेनम में आ रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट आयंस ये प्रोड्यूस करता है, क्योंकि पैंक्रेटिक जूस में बाइकार्बोनेट कंटेंट होता है काफी ज्यादा. सो इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ द काइम, देयर बाय आपको जो ड्यूडेनल अल्सर जो बनने का चांसेस होता है ये प्रिवेंट करता है. ओके, देन द स्टार्टिंग विद द प्रोटियोलिटिक एंजाइम. एंजाइम्स में क्या होता है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम. सो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जो भी एंजाइम्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं पैंक्रियास से, एक्सोक्राइन पैंक्रियास से, वो यूजुअली इनएक्टिव फॉर्म में मोस्टली होते हैं, है ना. और एक्टिव कहाँ पे आके होता है? जब ये थ्रू द डक्टल सिस्टम जब आकर के आपको ड्यूडेनम में आता है, व्हेन इट रीचेस द इंटेस्टाइन, ओनली आफ्टर इट बिकम्स एक्टिव, वहां पे जाकर एक्टिवेट होता है. अगर पैंक्रियास में हो जाएगा तो क्या होगा? पैंक्रेटिक टिश्यू जो है वो क्या होगा? डाइजेस्ट होने लगेंगे. वहां पे क्या होगा? पैंक्रेटिक टिश्यूज क्या होगा? डैमेज होने लगते हैं. सो दैट्स व्हाई ये क्या हुआ, नेचर ने ऐसा दिया है कि इसको इनएक्टिव बनाया वहां पे, है ना, हमारे पैंक्रियास में वहां पे इनएक्टिव बनाया जिससे कि हमारा पैंक्रियास सेफ रह सके. सो इट इज स्टोर्ड एज इनएक्टिव एंजाइम, प्रो एंजाइम्स के फॉर्म में होता है, लाइक ट्रिप्सिनोजन, ऐसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है. Chymotrypsinogen, and you know there are pro-carboxypeptidase A and B, then there are pro-nucleases, pro-elastases, then pro-collagenases. ये सब क्या होता है? सब जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है थ्रू द डक्टल सिस्टम, वहां जाके एक्टिवेट होता है. ओके, यू कैन सी एक्टिवेशन कैसे होता है ये. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज व्हाट हैपेंस दैट I have told you that जो भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, मेनली द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो हमारे पैंक्रेटिक टिश्यू में जो होते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जब इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं. कैसे एक्टिव बन जाते हैं? यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस दैट देयर इज ए एंजाइम दैट इज कॉल्ड द इंटेरोकाइनेज और इंटेरोपेप्टाइडेज. ये क्या होता है? ये हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में होते हैं. जो हमारे लाइनिंग जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है, ड्यूडेनल और जेजुनल म्यूकोजा है, वो जब क्या होता है, जब एसिडिक काइम आता है वहां पे तो वो एक्टिवेट हो जाता है ना, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, एंड दैट इंटेस्टाइनल म्यूकोजा स्टार्ट सीक्रेटिंग दिस एंजाइम दैट इज कॉल्ड द इंटेरोकाइनेज एंजाइम या इंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम. और ये क्या करता है? इंटेरोकाइनेज और इंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम वहां से निकल गया,
इंटेस्टिनल म्यूकोजा से। अब उधर से इनएक्टिव फॉर्म में हमारा ट्रिप्सिनोजन आया था, काइमेट्रिप्सिनोजन आया, प्रोइलास्टेज आया एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज आया, और भी जो इनएक्टिव फॉर्म्स में जो एंजाइम्स आए, वो क्या होता है जब इंटेरोकाइनेज इंटेरोपेप्टाइडेज के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट हो जाता है एंड ट्रिप्सिन के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द एक्टिव फॉर्म। वंस इट इज एक्टिवेटेड, ये ट्रिप्सिन जब एक्टिवेट हो जाता है, ये क्या करता है, ये फिर फर्दर ये ट्रिप्सिनोजन को इटसेल्फ ये एक्टिवेट करता है और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। एंड ऑल्सो दिस ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट द काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। सो व्हाट हैपेंस दैट एक बार ट्रिगर होता है, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है, देन इट इज स्टार्ट्स इन ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी हो जाता है इसका, है ना, अपने आप ही एक्टिवेट होते रहता है। एंड इट ऑल्सो एक्टिवेट द अदर एंजाइम्स ऑल्सो, प्रो एंजाइम्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन देयर आर लाइपोलिटिक एंजाइम्स, दैट इज द पैंक्रेटिक लाइपेज जो कि फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, है ना, फ्री फैटी एसिड्स में। देन कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेजेस, then phospholipase A2, these all will convert the larger lipid components into the smaller one, that is the fatty acids. And okay, so amylolytic enzymes, there are other enzymes, that is amylolytic, that is pancreatic amylase. ये क्या करता है, it hydrolyzes the starch and glycogen and other carbohydrates into the disaccharide and a smaller carbohydrate molecule, except the cellulose, you know. There are other very important enzyme which is having, that is the trypsin inhibitor. This trypsin inhibitor is very important because क्या करता है, भगवान ने क्या किया है कि हमारा जो ट्रिप्सिन, एक तो हमारा क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म में हमारे एंजाइम्स सिक्रेट किया, जब पैंक्रियास सिक्रेट कर रहा है। फर्दर प्रोटेक्शन क्या करता है, पैंक्रियास को सेफ रखने के लिए उसने जो टिश्यूज आपको पैंक्रेटिक जूसेस सिक्रेट कर रहे हैं इनएक्टिव फॉर्म में, वही सिक्रेट करता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी। वो क्या करता है, ट्रिप्सिन को इनएक्टिवेटेड स्टेट में रखता है। इट प्रिवेंट्स द ऑटोडाइजेशन ऑफ पैंक्रियास। ये क्या करता है, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट होने से बचाता है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर नाम ही है, एज द नेम सजेस्ट, इट विल इनहिबिट द एक्टिवेशन ऑफ द ट्रिप्सिन इन द पैंक्रेटिक टिश्यू, सो देयरबाय इट prevents the autodigestion of the pancreas. So factors, what are the factors, ये questions आते हैं एग्जाम्स में भी, that what are the factors which prevent the autodigestion of the pancreas, give reasons. So you know there are 3 reasons mainly, that is the most of the pancreatic enzymes are present as inactive form. एक तो inactive form में है, इसलिए ये क्या होता है, autodigestion को रोक रहा है। There are other factor is that trypsin inhibitor भी secrete करता है। टाइम हो गया 5 मिनट, 2 मिनट। So trypsin inhibitor keeps the trypsin inhibited. Okay, then the wall of the acini is thick, so does not allow the pancreatic enzymes to escape into the pancreatic tissue. यही क्या होता है, अगर trypsin inhibitor, एक कंडीशन होता है acute pancreatitis, ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है, trypsin inhibitor डेफिशिएंट हो जाता है, तो क्या होगा, अंदर में trypsin एक्टिवेटेड हो जाएगा। जब एक्टिवेटेड हो जाता है तो what it does that it activates the enzyme called phospholipase A2. फॉस्फोलाइपेड A2 को एक्टिवेट कर देता है इनसाइड द पैंक्रेटिक डक्ट, और वो फॉस्फोलाइपेज A2 जब एक्टिवेट हो जाएगा तो लेसिथिन एक एंजाइम है विच इज कमिंग, विच इट इज अ कंपोनेंट इन द बाइल से जो ऊपर सीबडी से आ रहा है ना, वो क्या करता है, लेसिथिन से एक फैटी एसिड चला जाता है तो इट फॉर्म्स द लाइसोलेसिथिन, एंड दिस लाइसोलेसिथिन इज अ डैमेजिंग मॉलिक्यूल एंड डैमेजेस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द पैंक्रेटिक टिश्यू. So it causes disruption in the pancreatic tissue and it causes necrosis of the surrounding fat. Okay, you can see the pancreatic juice. पैंक्रेटिक जूस में 2 कंपोनेंट है, ये जो एसिनर सेल्स होते हैं वो मेनली सिक्रेट करता है एंजाइम, पैंक्रेटिक एंजाइम, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एंजाइम कोलिसिस्टोकाइनिन एंजाइम, एंड दिस डक्टल सिस्टम जो लाइनिंग डक्ट्स होते हैं ये सिक्रेट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्रेटिन अल्कलाइन बाइकार्बोनेट पैंक्रेटिक जूस. Okay, that is the aqueous component, that is the line, it is secreted by the aqueous component in bicarbonate with water, that is the lining epithelial cells जो होते हैं वो secrete करते हैं bicarbonate. This serves to neutralize the acid, है ना. ये आपको बाइकार्बोनेट कैसे रिलीज हो रहा है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. कार्बोहाइड्रेट CO2 प्लस H2O जो मेटाबॉलिज्म से CO2 बन रहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3 बनाया कार्बोनिक एसिड, और ये आपको बाइकार्बोनेट H प्लस में ब्रेक डाउन हो जाता है अंडर द सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज. दिस बाइकार्बोनेट आयन एक्सचेंज विद द क्लोराइड आयन
ये डक्टल ल्यूमेंस में होते हैं, ये एक्सचेंज होते हैं, और ये क्लोराइड आयन फर्दर जो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस एक आपको चैनल्स होते हैं, है ना, रेगुलेटर होते हैं, ये क्या होता है, क्लोराइड आयन वापस दे देता है इसको। सो बाइकार्बोनेट आयन ये न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, ये जो आपका जो एल्कलाइन इन्वायरमेंट है ये प्रोड्यूस करता है। H+ आयन सोडियम से एक्सचेंज करता है, ओके, एंड दिस सोडियम आयन विच इज एंटरिंग इट इज एक्सचेंजिंग विद द पोटेशियम आयन, ओके। 3 फेजेस होते हैं, सिफाइलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टिनल फेज। सिफाइलिक फेज है ना, बिफोर द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द स्टमक, एंड इट इज इनिशिएटेड ऑन थिंकिंग एंड सीइंग अबाउट द फूड, एंड 20% अकाउंट करता है पैंक्रेटिक सिक्रीशन का, मेनली रेगुलेटेड बाय द वैगल स्टिमुलेशन। 2 फेज। देन गैस्ट्रिक फेज अकाउंट फॉर 10% एंड इट इज अंडर न्यूरल कंट्रोल, वैगस नर्व के थ्रू होगा, एंड हार्मोनल कंट्रोल थ्रू द गैस्ट्रिन हार्मोन, ओके। And the last phase, the intestinal phase, it accounts for 80%, and when the chyme enters the duodenum, under that influence, this intestinal phase is stimulated, and mainly it is secreted by, characterized by copious secretion of enzymes and aqueous component, and it is regulated by hormone, secretin and cholecystokinin. Thank you so much.